Thank you, sir. You made life easier for me. And as the professor said, Cubs is actually a state of mind. It's not a simple disease, constipation. It's a state of mind. You are in a general practice. बहुत सारे लोग पहले आपके पास ही आते हैं इन complaints के बाद, and then they are funneled into the physicians or gastroenterologist. Now, we see functional disorders are chronic, recurrent GI symptoms. दो फीचर्स हैं कि ये क्रॉनिक होते हैं, बहुत लंबे अरसे से चल रहे होते हैं. जब आपके पास पेशेंट आता है ना, वुड से कि जी मुझे ये सेट ऑफ कंप्लेंट्स है और ये इतने दिन से शुरू हुआ है, तो यू डोंट स्टॉप देयर, आस्क देम ये पहले भी कभी हुए हैं. सो व्हेन यू एक्सप्लोर इट, यू विल फाइंड दीज सिम्टम्स आर गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो दे आर क्रॉनिक, दे आर इंटरमिटेंट. दरमियान में ऐसे पीरियड्स आते हैं जिसमें वो बिल्कुल ठीक होते हैं, एंड देन दे गेट द सिम्टम्स. एंड यू कैन नॉट फाइंड अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट. आरिफ साहब ने एक स्लाइड शो की थी, दी रेड फ्लैग्स. ये रेड फ्लैग्स वही हैं कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आपको कोई नहीं मिलता. आप हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ बेसिक टेस्ट करवा के देखते हैं, यू फाइंड दैट दे आर ऑल नॉर्मल, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिल रही है. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनल डिसऑर्डर. जो रोम 4 है उसके मुताबिक वी हैव ऑलमोस्ट 32 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल डिसऑर्डर्स, जिनमें सब डिसऑर्डर्स भी मौजूद हैं. बट द प्रोटोटाइप ऑफ ऑल दीज डिसऑर्डर्स इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. नाउ व्हाट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? Irritable bowel syndrome is actually abdominal pain. It's a recurrent abdominal pain which may be associated with defecation. There is associated change in frequency of stool and change in consistency of stool. Basically, it's an abdominal pain. इसी तरह का एक functional abdominal pain भी होता है जिसमें ये बाकी के नीचे के 3 symptoms मौजूद नहीं होते. Altered defecation, स्टूल फ्रीक्वेंसी और स्टूल कंसिस्टेंसी चेंज नहीं होती. पेशेंट्स को सिर्फ एब्डोमिनल पेन होता है. सो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट सिंड्रोम. वो भी एक फंक्शनल सिंड्रोम है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल एब्डोमिनल पेन. सो वी गॉट फंक्शनल डिसऑर्डर IBS. नाउ वी सी लिटिल बिट ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. हमने जो है IBS के ऊपर पिछले 100-150 साल में काम करना शुरू किया. इससे पहले कोई बहुत ज़्यादा काम हमारे पास अवेलेबल नहीं है. सो हिस्टोरिकली अब जब देखते हैं एरिस्टोटल वगैरह, उन्होंने काम किया था. दे डिस्क्राइब्ड दैट बॉडी एंड माइंड आर अटरली इनसेपरेबल. दे रिजाइड इन द सेम प्लेस. दिस कॉल्ड हॉलिज्म थ्योरी. एंड देन व्हेन पोस्टमार्टम वाज स्टार्टेड इन 1700s, जो फ्रेंच फिलोसफर है रेनी डिकार्ट, ही सेपरेटेड कि जी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. Body and soul are different, and now we have come back to the original theory, biopsychosocial model of disease, कि ये possible नहीं है कि हम physical being को psychological being के साथ या social उसके साथ separate कर सकें. So now we live with this theory, biopsychosocial model of disease. I would like to add, इस disease में एक और component भी होता है economical, not only social, economical component भी होता है. You know कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है, नॉट बिकॉज ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स ओनली. सो फॉर मी इट इज बायोसाइको सोशियो इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डिजीज. नाउ व्हाई वी लुक आफ्टर दिस पेशेंट, व्हाई आर वी सो वरिड? नंबर 1, एक तो इनकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है. स्टडीज रिपोर्ट के 20 से लेके 40% तक जो है पॉपुलेशन दे मे हैव फंक्शनल डिसऑर्डर्स. सो द वॉल्यूम ऑफ द condition is very huge and it affects the quality of life. Quality of life जो IBS के पेशेंट हैं उनकी डायबिटिक्स से बहुत ज़्यादा ख़राब होती है. डायबिटिक्स की निस्बत उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब है. दिस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू पेशेंट्स हु गॉट फ्रैंक डिप्रेशन. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू एड्रेस दिस इशू. नाउ व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ IBS? व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ IBS? कैन एनीबडी टेल मी? There is no treatment of IBS. Because we do not understand IBS, we cannot treat it. The current management strategy is based on symptomatic treatments, which is based on our current understanding of the underlying pathophysiological process. कि जिस्म में हो क्या रहा है उसके लिए हम एक symptomatic treatment plan करते हैं. We do not understand the disease fully, we cannot treat it. So at the moment there is no treatment for IBS.
Now pathophysiological mechanism क्या क्या ख़राब है? There is number one disordered motility. इंटेस्टाइन में नॉर्मल प्रोपल्शन के बजाय इंटेस्टाइन सारी ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है. देयर इज नो प्रोपल्सिव मूवमेंट. दिस इज वन डिफेक्ट. एक्चुअली कोई भी डिफेक्ट ऐसा नहीं है जो बिल्कुल क्लियर पैथोग्नोमोनिक हो के आईबीएस में इस किस्म का डिफेक्ट होता है इंटेस्टाइन की मोटिलिटी के अंदर. देयर आर टू ऑफ देम आर लिटिल मोर क्लियर. प्रोलॉन्ग ट्रांजिट टाइम इन कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट आईबीएस एंड देयर इज एक्सैजरेटेड मोटर रिस्पॉन्स which results in diarrhea, that is the enhanced gastrocolic reflex या duodenocolic reflex. जिस वक्त cholecystokinin से stimulate करते हैं या meal से stimulate करते हैं, there is a burst of activity in the intestine. So this is enhanced gastrocolic और duodenocolic reflex. So ये motility disorders हमें पता है कि IBS में मौजूद हो सकते हैं, but in all patients these disorders may not be present. Similarly, there is altered visceral perception. कि पेशेंट की ये जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनकी परसेप्शन डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल, देयर इज हाइटेंड रिस्पांस टू बैलून डिस्टेंशन. अगर स्टमक में या रेक्टम में बैलून डिस्टेंड करें, दे हैव एन एबनॉर्मल परसेप्शन एज कंपेयर टू पीपल हु डू नॉट हैव दीज सिम्टम्स. एंड देयर इज एबनॉर्मल सेरेब्रल प्रोसेसिंग. कुछ लोगों में ये सिम्टम्स जो है इसके साथ when we study we find there is functional abnormalities or functional activity going on in the cortex. तो ऐसे मरीजों के अंदर पेन रिपोर्ट करने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है. दे वांट सम अटेंशन, दे वांट टू टेल कि इस किस्म की प्रॉब्लम हो रही है. एंड देन दे मे बी ब्लोटिंग सेंसेशन बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल प्रोपल्शन ऑफ गैस लोड. नॉर्मली आईबीएस के पेशेंट्स के अंदर गैस उतनी ही मौजूद होती है जितनी नॉर्मल लोगों के अंदर होती है, बट दे डोंट हैव दैट नॉर्मल प्रोपल्सिव एक्टिविटी, जिसकी वजह से उनका पेट बहुत फूला हुआ महसूस होता है. एंड यू वुड हैव सीन सम पेशेंट्स दे कंप्लेन कि जी वाकई पेट जो है वो इतना डिस्टेंड हो जाता है कि कपड़े फंसना शुरू हो जाते हैं. सो इट रियली हैपन्स. द पेशेंट्स आर अनएबल टू प्रोपल्स दैट गैस नॉर्मली. देयर मे बी म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन इन सम ऑफ द पेशेंट्स. देयर इज ऑल्टर्ड फीकल माइक्रोफ्लोरा. दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज गट माइक्रोबायोटा जो है they have been implicated in lot of diseases, especially the diseases of the gut and the psychiatric diseases. इसके अलावा कुछ cardiac diseases के अंदर भी इसकी implications आ रही हैं कि they might be playing a role. There is a huge number of DNA present in the gut. How can we imagine that this DNA can be quiet and it's doing nothing? It is interacting with its host. So जिस वक्त हम किसी IBS के patient से फीकल कंटेंट लेके किसी दूसरे जर्म फ्री एनिमल के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं, वी फाइंड कि उनके अंदर आईबीएस टाइप के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, परसेप्शन चेंज होना शुरू हो जाती है. जबकि अगर नॉर्मल लोगों का फीकल ट्रांसप्लांट किया जाए तो दीज सिम्टम्स डू नॉट डेवलप. सो दे मे बी प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ आईबीएस. Small bowel bacterial overgrowth, which is quite similar in presentation to IBS, and there is a plus minus role that this may be associated with IBS. लेकिन इसके बारे में कोई conclusive evidence नहीं है कि ये जो bacterial overgrowth है it's associated with IBS. Food sensitivities, gluten sensitivity, इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा because this is a disease which is unrecognized in most of the patient. इसके बारे में your threshold should be little lower. जब भी कोई IBS या abdominal symptom का patient आता है जिसको साथ अगर unexplained anemia भी है या bone disease भी है, always think that this is celiac disease और उसको investigate करें. Genetics, no clear evidence of genetic involvement is available. Some of the studies say कि monozygotic twin के अंदर प्रेवलेंस ज़्यादा है. कुछ कहते हैं कि कंकॉर्डेंस रेट जो है वो उतना स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है. बट इफ वन ऑफ द पेरेंट्स इज सफरिंग फ्रॉम IBS, the chances of having IBS in the child is more. This probably is because the patients or the children, they learn from their parents. वो अपने environment से ये सीख लेते हैं. So जब आपके पास younger patients के जो इस symptoms के साथ आते हैं, you just talk to them and see if there is anybody in the family engaged. अगर किसी को family में भी इस किस्म की बीमारी है, the chances are the children have learned this behavior from their parents and now they have started presenting with their own symptoms.
And these patients tend to have more psychosocial dysfunctions. For example, they may be having more anxiety, more depression, phobias, sleep problems, childhood abuse issues. Now, one important hormone or factor, that is corticotrophin releasing factor, which is released from the hypothalamus, has an important role. The abdominal pain and colonic motility in an IBS patient is higher if you give intravenous injection of corticotrophin releasing factor. This works through the pituitary, produces ACTH, that produces cortisol, and cortisol has its impacts on the intestine. And this response can be blunted by giving a CRF receptor antagonist. So this may have an important role in patients who develop IBS. Now, what is the function of the GIT? Is it only absorption of nutrition and evacuation of waste? Now we find the GI tract has more functions than just getting in the food and evacuating the waste products. Nutrition, endocrine functions, exocrine functions, neural functions, and immune functions. So it has multiple roles. Now this is our current understanding that this gut-brain axis is an important part in the presentation of patients who develop functional GI disorders. There is a bilateral communication. There is an enteric nervous system in the gut, and there is a central nervous system. They communicate with each other. They have similar neurotransmitters. In fact, the serotonin, which is more important neurotransmitter, इसकी concentration जो है वो gut में central brain की निस्बत कहीं ज़्यादा होती है. Almost 95% of serotonin is present in the enteric nervous system. CNS functions modulated by serotonin include depression, anxiety, and cognition. So this enteric nervous system can influence the central nervous system, or the central nervous system can influence this enteric nervous system. So in दोनों की cross talk जो है, that results in the production of symptoms. अगर हम इसको intercept कर सकते हैं, there is some improvement in the patient's symptoms. The brain-gut axis is a bidirectional communication system between central nervous system and GI tract. Serotonin functions a key neurotransmitter at both terminals of the. So ये central nervous system में भी काम करती है और ये peripheral nervous system में भी काम करती है. That's why our antidepressants, they are quite useful in these patients. Now these are the channels through which gut and the brain can interact. Vagus nerve, the neuroendocrine signalings, tryptophan metabolism. You see, some of the microbiota can change tryptophan into serotonin. The immune system, altered gut permeability, allowing chemicals to be absorbed from the gut into the central circulation, production of microbial metabolites. So these are different channels by which the enteric nervous system and the central nervous system, they can communicate. Now when you treat these patients, identify symptoms, previous therapies, expectations. जब specialist के पास आते हैं, they have lot of expectations कि शायद ये हमें ठीक कर देंगे. You have to talk to them कि इनको ठीक नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ control किया जा सकता है. Educate and reassure about the disease, that this is a chronic disease, but this is a non-serious disease, not going to have effect on the physical working of the systems. Both non-pharmacological and pharmacological treatments should be used. Now, the initial therapies based, जिन लोगों को gas ज़्यादा होती है, they should be advised gas reducing diets like lactose ना लें. This is milk products. Food maps, वो list दी हुई है food maps की. This is fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols. So they should be avoided. इनको याद रखना बड़ा मुश्किल है. ये चार्ट आपके पास होना चाहिए. मैं बड़ी कोशिशों के बावजूद सबको याद नहीं कर पाया हूँ कि कौन कौन से होते हैं. बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. Gluten, fiber, soluble fiber should be used. Insoluble fiber should not be used in the patient, in these patients. ये जो इसबगोल है, this is insoluble fiber. ये insoluble fiber ज़्यादा गैस पैदा करता है. Enhance physical activity. Physical activity enhance करने से क्या होता है? Mind gets better.
लैक्टोज तो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ग्लूटीन जो है वो 3 चीजों में होती है, गंदम के अंदर होती है, जौ के अंदर होती है और राई के अंदर होती है। राई ये एक सीड है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, यूरोप में होता है। ये उर्दू वाला राई नहीं है जो सरसों का बीज होता है, ये राई एक गंदम की तरह का बीज है जिससे आटा बनाते हैं। सो इन 3 चीज़ों के अंदर ग्लूटीन होती है। And then for constipation, we can use drugs which can increase the volume of the stool and drugs which can increase the motility. अब इसके बारे में फैज साहब ने पहले, आरिफ साहब ने बताया सारे ड्रग्स जो मुख्तलिफ किस्म के हैं। जो ऊपर वाला ग्रुप है, दिस इंक्रीजेज द स्टूल वॉल्यूम, और जो नीचे टैगासोड तो हमने मार्केट में से अब उठा लिया कि बिकॉज इट हैड कार्डिक प्रॉब्लम्स। अब नाउ वी गॉट प्रोक्यूलाप्राइड। प्रोक्यूलाप्राइड जो है वो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के अंदर इंडिकेटेड है। अभी इसका अप्रूवल जो है IBS के अंदर नहीं आया, बट सम ऑफ द पीपल आर यूजिंग दिस इन IBS, जो ये प्रोक्यूलाप्राइड है, बट इट्स ऑफ द सेम ग्रुप जो कि ये टैगासोड का है। And then in patients who've got diarrhea, you can use loperamide, which decreases peristalsis, prolongs transmit time, and reduces fecal volume. Bile acid sequence यूज़ कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे मरीज जो हैं ऑलमोस्ट 50% बाइल एसिड की एक्सक्रीशन उनमें बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डायरिया होता है। सो यू कैन यूज़ दीज ड्रग्स, एंड देन यू कैन यूज़ सर्टन ड्रग्स लाइक एलोस्टेरॉन, विच इज़ 5-hydroxytryptamine 3 receptor antagonist। ये हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसकी जगह हम ऑनडेंस्टिरोन जो है वो ट्राई करके देख सकते हैं। इट्स गॉट अ सिमिलर ड्रग। एंड देन एलेक्ट्राडोलिन, ये भी एक ड्रग है विच इज़ नॉट अवेलेबल विद अस। दिस वर्क्स ऑन द ओपियोइड रिसेप्टर्स, सो इट कैन कॉज डिक्रीज इन द गट ट्रांजिट। जो ट्रांजिट टाइम है उसको ज़्यादा करता है, और स्क्रीशन जो है वो गट। एंड देन यू कैन यूज दीज एंटीस्पाज्मोटिक, antidepressants, especially if the patients have pain. Then antibiotics and probiotics. Patients who got resistant symptoms, you can go for anxiolytics, aldafermin, ketotifen, fecal microflora transplantation. और एक लास्ट टर्म है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, दैट इज साइकोबायोटिक्स। टेल मी व्हाट आर साइकोबायोटिक्स? थैंक यू।